हेलो दोस्तों। आज हम एलिमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। द द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी Secretaries of India is the only recognized professional body in India to develop and regulate the profession of company secretaries in India. ये रिकॉग्नाइज प्रोफेशनल बॉडी है, एक बॉडी बनाई गई है कंपनी सेक्रेटरीज के लिए, जो कंपनी सेक्रेटरी को डेवलप करेगी, रेगुलेट करेगी और उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगी। इसलिए कंपनी सेक्रेटरी ने एक बॉडी बनाई है जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। इट इज प्रीमियर नेशनल इट इज अ प्रीमियर नेशनल professional body set up under an act of parliament, the company secretaries act 1980। कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के तहत ये आईसीएसआई बनाया गया है। ICSI function under the jurisdiction of the Ministry of Corporate Affairs। एमसी के अंदर आता है आईसीएसआई अफेयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। The institute provides top quality education to the Institute of Company Secretaries course and best quality set standard to CS members. ICSI has been contributing to the initiative of Government of India. ICSI has been contribute to the initiative of the Government of India that have potential to excel the social economic growth of India। ICSI भी एक पार्ट है जो गवर्नमेंट को क्या करता है, हेल्प करता है, जो कि सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ करने में गवर्नमेंट की क्या करता है, हेल्प करता है। द मोटो विजन एंड कोर वैल्यू ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सत्यम वद धर्मम चर। स्पीक द ट्रूथ, अबाइड बाय द लॉ। सच बोलो। क्या है? स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो। अबाइड बाय द लॉ। विजन क्या है? टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। विजन ये है कि कंपनी सेक्रेटरी एक ग्लोबल लीडर बनाना है। उनको क्या बनाना है? एक ग्लोबल लीडर बनाना है। प्रमोटिंग कॉर्पोरेट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या बनाना है? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस बनाना है। मिशन क्या है? टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल फैसिलिटेट गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उनके अंदर इतना हाई कैलिबर प्रोफेशनल लाना है कि वो मैनेज कर सके, अपने अंदर डेवलप कर सके क्या, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कोर वैल्यूज। अब हम देखेंगे कोर वैल्यूज। कोर वैल्यू आर द एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ। Core values are the expression of belief. Core values are the expression of
belief followed by an individual, group, community in their personal or professional behavior, individually or collectively. The ICSI defines itself and its member the following core values. क्या क्या core values है देखें. Integrity. The ICSI vision to be global leader in promoting good corporate governance is a promise to the nation. आईसीएसआई क्या प्रॉमिस करता है गवर्नमेंट को, नेशन को, कि हम एक ग्लोबल लीडर तैयार करेंगे जो कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अच्छा बनेगा. It cast upon the ICSI and profession of the company secretaries a huge responsibility to deliver upon this promise with objectivity and integrity as a core value. There is no middle path to integrity. आईसीएसआई ने कंपनी सेक्रेटरीज को बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है अपॉन विथ ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटीग्रिटी. ऑब्जेक्टिव एंड इंटीग्रिटी क्या है कोर वैल्यूज. देयर इज नो मिडल पाथ टू इंटीग्रिटी. कोई मिडल पाथ नहीं है इंटीग्रिटी के अंदर. Etymologically, the word integrity derived from the Latin word integer. integer. इंटीग्रिटी कहाँ से वर्ड डिराइव है लैटिन वर्ड से. लैटिन वर्ड इंटीगर which means whole complete, which means whole or complete. In this context, integrity may comprise the personal inner sense of wholeness deriving from character, courage, and consistency, as integrity covers a sense of wholeness and strength. Members shall be guided by a set of core principles that will empower them to remain consistent with high standards. बोला है इंटीग्रिटी क्या कन्वे करती है सेंस ऑफ होलनेस. होलनेस मतलब पूरा. और स्ट्रेंथ मतलब ताकत. मेंबर शॉल बी गाइडेड बाय सेट ऑफ कोर प्रिंसिपल. गाइड करता है कोर प्रिंसिपल को कौन कंपनी सेक्रेटरी को. कंसिस्ट विथ हाई स्टैंडर्ड with compassion, dependability, generosity, honesty, openness, transparency, loyalty, maturity, objectivity, trust, and wisdom. Ethics. The term ethics has its origin from a Greek word. Term has from Greek word ethos, which means character or custom, which means character or custom होता है इसका मतलब. The distinguish character, moral nature or guiding belief of person, institution group or a group. जो टर्म इथिक्स है वो डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से इथोस से विच मीन्स कैरेक्टर और कस्टम. स्वभाव और कस्टम. कैरेक्टर और कस्टम. द डिस्टिंग्विश कैरेक्टर moral nature or guiding belief of a person, institution, or a group. Ethics, in its simple form, means position or sense of right or wrong. एथिक्स सिंपल है. क्या बोला है मीन्स क्या होता है इसका मतलब क्या सही है और क्या गलत है. वट एवर इज कंसिस्टेंटली राइट is ethical. Whatever is not is unethical. In other words, ethics in the sense of right and wrong, coupled with a
desire to do good in some measure for someone. The ICSI has been built on the top principle of ethics, and its members continuously strive to promote ethical practice and hold the profession highest esteem, which is integral to maintaining quality and reputation of both the ICSI and its members. जो ICSI है वो कौन सी प्रैक्टिस कर रहा है? इथिकल प्रैक्टिस. कैसी प्रैक्टिस? इथिकल एंड प्रॉम्प्ट प्रैक्टिस. जो इनको क्वालिटी मेंटेन करना है वो कंटिन्यूसली मेंटेन करते हैं क्वालिटी एंड रेपुटेशन को. Being stakeholder centric, being stakeholder centric. The ICSI, its member, and the team ICSI, the pledge to uphold the established principle of professional ethics, value, standard, and will always promote honesty, transparency in the behavior, practice, and profession. जो भी कंपनी सेक्रेटरी, जो भी आईसीएसआई के रूल्स है, जो भी रूल्स है, एथिक्स है, वैल्यूज है, स्टैंडर्ड है, उसको क्या करना है? प्रमोट करना है. प्रमोट करना है ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द बिहेवियर, प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन. किसके तहत? बिहेवियर के तहत, प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन के तहत. रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिलाय reliability. Reliability is an assurance of quality of service and commitment. मतलब इनकी जो क्वालिटी है, जो सर्विस है, वो कैसी होनी चाहिए? एकदम बढ़िया होनी चाहिए. At the ICSI, reliability is a core value reinforced by stringent process, especially focusing on quality of service, predictability, and reliability. The value are on intrinsic component of work culture, sustainable growth, quality and predictability through the commitment and value added service is what will be the strongest USP of the ICSI and its member. We shall continue to build on reliability as our core value, for it's the sum total of quality service to our stakeholder. जो भी हम सर्विस दे रहे, जो भी हम कंपनी सेक्रेटरी जो भी सर्विस दे रहा है वो कैसी होनी चाहिए? रिलायबल होना चाहिए. क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो भी मैं सर्विस दूंगा किसी भी में पर्सन को, तो कैसी होनी चाहिए? क्वालिटी, क्वालिटी होनी चाहिए उस सर्विस में. रिलायबिलिटी, द वैल्यू इंटेंसिव कंपोनेंट, वर्क कल्चर, सस्टेनेबल ग्रोथ. ओनरशिप, ownership is the synonyms with responsibility, accountability, and empowerment. Ownership is ownership. Ownership. Ownership is synonyms with responsibility, accountability, and
एम्प्लॉयमेंट। ओनरशिप सिनोनिम्स है कि इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट के साथ। द आइडिया ऑफ ओनरशिप इज मच मोर देन सिंपल अ willingness to accept own criticism, deficiency, or oversight. It is more about setting one priorities, placing rightful obligation on other as high as obligation to self. To be responsible is to always do the right thing in the eye of values, stakeholder, and the public at large. It is to value the trust and confidence stakeholder put in them. It is about commitment to keep a promise or make right some unintentional unintentional wrong, even when it is inconvenient to do so. Ownership being one of our core values, we believe that it will reduce the risk, increase efficiency, and contribute to goodwill, reputation, and brand image of the institution and profession. We shall uphold this at all times. Ownership being stakeholder centric. Being stakeholder centric. Being being stakeholder centric. Stakeholder is our most value consistency when it comes to being able to achieve our goal. स्टेक होल्डर क्या है? हमारे मोस्ट वैल्यूएबल कंसिस्टेंसी है, जो कम करते वो आते हैं और अचीव आवर गोल। We believe in constant stakeholder constitution and in translating their aspiration into achievable goal. We take pride in having a transparent and stakeholder focused approach in having trustworthy and collaborative relationship with them. We take pride movement किसके तहत? Transparent and stakeholder focused approach in having trustworthy and collaborative relationship हमारे साथ। It will be our endeavor to constantly create, activate new channel and pathway to not only meet but beat the expectation of our stakeholder. This window into the future will help us to achieve the sustained performance and growth. Company Secretary. According to Section 2, Clause 1, Subclause C of the Company Secretaries Act 1980, Company Secretary means a person who is a member of the Institute of Company Secretaries of India. The role of Company Secretary is defined in various other legal enactments. कंपनी सेक्रेटरी की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में दी गई है। कंपनी सेक्रेटरी मतलब ऐसा पर्सन जो आईसीएसआई का मेंबर है। Under the Companies Act 2013, the company secretary has been defined under Section 2, Clause 24 as a company secretary. A secretary means a company secretary as defined in Section 2, Clause 1, Subclause C of the Companies Secretaries Act 1980, who is appointed by the company to perform the function of the company secretary under the Companies Act 2013.
कंपनी एक्ट 2013 के तहत कंपनी सेक्रेटरी वो कंपनी सेक्रेटरी है जो सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के तहत दिया गया है, जो डेफिनेशन दी गई है। Company secretary is recognized as one of the key managerial personnel of the company under the Companies Act 2013। कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है, बहुत बड़ा पावर आता है कंपनी सेक्रेटरी को। जब कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के अंदर अपॉइंट होता है एज अ कंपनी सेक्रेटरी, तो वो एक की मैनेजेरियल पर्सन जाना जाता है और उसका जो पावर होता है, जो दर्जा होता है, बहुत बड़ा होता है। Section 203 of Companies Act 2013 read with Rule 8 of the Companies Rule 2014 provide that every listed company and every other public company having a paid up share capital of 10 crore rupees or more shall have the following full-time key managerial personnel। देखो, की मैनेजरियल पर्सनल में कौन कौन आता है? मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कंपनी का मालिक होता है वो आता है, या जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है, मैनेजर एंड इन द ऑब्सेंस होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी आता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आता है। सीईओ के साथ बैठना उठना होता है कंपनी सेक्रेटरी का। अकॉर्डिंग टू रूल 8A ऑफ द कंपनीज, every private company which has paid up share capital of rupees 10 crore rupees or more shall have a full-time company secretary। अगर प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल, जो पेड अप शेयर कैपिटल होता है, पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 10 करोड़ और ऊपर है, तो उसको भी एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, The function the function of the company secretary shall include the function of the company secretary shall include to report to the board about compliance with the provision of this act, the rules made thereunder, and other law applicable to the company। कंपनी सेक्रेटरी को रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है, ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह बनानी पड़ती है अबाउट किसके बारे में? कंप्लायंस के बारे में, लॉ के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, जो कि कंपनी को अप्लीकेबल होंगे। टू इंश्योर दैट द कंपनी कंप्लाई विद अप्लीकेबल सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, जो कंपनी सेक्रेटरी स्टैंडर्ड को अप्लाई होते हैं वही कंप्लायंस वो बनाता है। टू डिस्चार्ज सच अदर प्रेस्क्राइब ड्यूटी, to discharge such other prescribed duty, duties of company secretary, duties duties of company secretary, the duties of company secretary shall also discharge the following duties, namely कंपनी सेक्रेटरी को की क्या क्या ड्यूटीज है वो हम देखेंगे। To report to the board about compliance with provision of Companies Act 2013 and rules made thereunder and other laws applicable to the company। रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट बनाएगा किसके? बोर्ड के लिए रिप्रेजेंट करता है बोर्ड को कंपनी सेक्रेटरी। कंप्लायंस विद प्रोविजन विद द कंप्लायंस कंपनीज एक्ट 2013, द रूल्स मेड देयर अंडर and other law applicable to the company।
रिपोर्ट बनाएगा, मीटिंग्स बनाएगा, रिपोर्ट बनाएगा। कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के लिए to ensure that company complies with applicable secretarial standard। वो इंश्योर करेगा कि कंपनी स्टैंडर्ड फॉलो हुए है कि नहीं। To provide to the directors of the company to provide to the director of the company collectively and individually such guidance as they may require with regard their duties, responsibilities and power to provide the directors of the company collectively and individually such guidance as they may require with regard to the duties, responsibilities and powers to facilitate the convenience of meeting, attend board committee, general meeting or maintain the minutes of this meeting। कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है? मीटिंग बनाता है, मीटिंग बुलाता है, मैनेज करता है, उसके मिनट्स बनाता है, फिर मिनट्स के बाद एजेंडा भी बनाता है। ये सब काम किसके होते हैं? कंपनी सेक्रेटरीज के होते हैं। टू ऑब्टेन approval from the board to obtain approval from the board general meeting government and such other authorities as required under the provision of that। कंपनी सेक्रेटरी अप्रूवल लेता है बोर्ड से, किसके लिए? जनरल मीटिंग के लिए, गवर्नमेंट से, सच सच अदर अथॉरिटी एज रिक्वायर्ड अंडर प्रोविजन ऑफ दैट, जो जो एक्ट के तहत आते हैं। To represent before various regulators, and other authority under the act in connection with discharge in various duty under the act। कंपनी सेक्रेटरी रिप्रेजेंट करता है रेगुलेटर्स को एंड अदर अथॉरिटीज को, किसके तहत? अंडर एक्ट के तहत। To assist the board in the conduct of the affair of the company, कंपनी सेक्रेटरी असिस्ट करता है, गाइडेंस देता है बोर्ड को, कंपनी के लिए ये करना चाहिए, कंडक्ट अफेयर्स ऑफ द कंपनी। टू असिस्ट एंड एडवाइज द बोर्ड, टू असिस्ट to assist and advise the board in ensuring the good corporate governance and in complying with the corporate governance required and best practice to discharge such other duties as have been specified under the act rules, such other duties as may assigned by the board from time to time। सच अदर ड्यूटी कुछ ड्यूटीज है जो असाइन करना पड़ता है बोर्ड को टाइम टू टाइम, वो करने का काम कंपनी सेक्रेटरी का होता है। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, as per section 2 clause 25 of the company act 2013, company secretary in practice means a company secretary who is deemed to be practiced under section 2 clause 2 of the company secretaries act 1980। A member of the institution shall be deemed to be in practice when individually or in partnership with one or more of member of the institution in practice or in partnership with a member of such other recognized profession as may be prescribed in consideration or remuneration received to be received। Engage himself in practice of the profession of company secretary to be relation in company। कई कंपनी सेक्रेटरी होते हैं जो क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। वो होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी एज ए ज्वाइन नहीं होते। वो क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, जब जैसे ही उनका कोई काम आया तो वो आके कर देंगे।
जैसे कुछ जो भी काम आया कंपनी सेक्रेटरी का कंपनी के अंदर वो आएंगे और अपना काम करके देंगे। डीम्ड नहीं, डीम्ड कंपनी सेक्रेटरी भी बोला जाता है, वो अपना प्रैक्टिस करते हैं। फुल टाइम एज अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं होते। Engage himself in a practice of professional company secretary relation in relation to any company। रिलेशन में रहते हैं, कंपनी के अटैच में रहते हैं। Offer to perform service in relation to the promotion, forming, incorporation, amalgamation, reconstruction, recognition or winding up of the company। प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या परफॉर्म करते हैं? सर्विस देते हैं। सर्विस कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है? प्रैक्टिस में सर्विस देता है अपनी, प्रमो टू द प्रमोशन, प्रमोशन के लिए। फॉर्मिंग कंपनी फॉर्म करना, इनकॉर्पोरेट करना, अमलगमेशन करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, रिकॉग्निजेशन और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। शुरू से लेकर तो कंपनी बंद होते तक के काम करता है एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। Unauthorized representative. Unauthorized representative of a company with respect to filing, re- registering, presenting, attesting to verify any document, including forms, application, and return by or on behalf of the company। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनता है कंपनी का, कौन? कंपनी सेक्रेटरी। किसके तहत? बिहाफ ऑफ द कंपनी। और शेयर ट्रांसफर एजेंट, कंपनी के शेयर ट्रांसफर करना। इशू हाउस, issue house, a share and stock broker, a secretary, auditor और consultant। सेक्रेटरी ऑडिटर भी बनता है कंपनी सेक्रेटरी। सेक्रेटरी ऑडिट होता है और कंसल्टेंट होता है, कंसेंट देता है। एडवाइजर टू अ कंपनी और मैनेजमेंट इंक्लूडिंग एनी लीगल प्रोसीजर मैटर। कंपनी को एडवाइस देता है मैनेजमेंट को, कंपनी सेक्रेटरी। इशूइंग सर्टिफिकेट ऑन बिहाफ फॉर द पर्पज ऑफ द कंपनी, सर्टिफिकेट इशू करना कंपनी के। Hold himself out to the public as a company secretary in practice, renders professional service assistance with respect to matter principal detail related to the practice of the profession of a company secretary। कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है? कंपनी सेक्रेटरी एक प्रोफेशनल सर्विस देता है, किसको? कंपनी को। Render such other service in option of council may be rendered by company। अदर सर्विस भी कंपनी को देता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी in practice have been authorized by government as well as regulatory bodies। कंपनी सेक्रेटरी किसको किसको ऑथराइज करता है? गवर्नमेंट को और रेगुलेटरी बॉडीज को, इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एनसीएलटी, एनसीएएलटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, रेरा मतलब, स्टॉक एक्सचेंज टू एक्ट as an authorized representative and issue various certificates and undertake secretarial audit of bigger companies। Company secretary being multidisciplinary professional render service in following area। कंपनी सेक्रेटरी इन रेगुलेटरी बॉडीज को के अंदर तहत काम करता है और गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत काम भी करता है। Corporate governance and secretarial service, corporate governance and secretarial service।
Corporate governance service, advising on good governance practice and compliance of corporate governance norm as prescribed under various corporate securities and other business law regulation and guidelines made thereunder. कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस देता है गवर्नेंस प्रैक्टिस के तहत and compliance of corporate governance norm as prescribed under various corporate securities, business law, regulations, guidelines. इसके तहत कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस देता है गाइडलाइंस देता है कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल सर्विस क्या क्या है देखो promotion formation incorporation of company and matter related therewith कंपनी को प्रमोशन दिलाना कंपनी को फॉर्म करना इनकॉर्पोरेट करना ऑफ कंपनीज एंड मैटर रिलेटेड देयर कंपनी के जो भी मैटर होंगे देखना फाइलिंग रजिस्टरिंग एंड डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग फॉर्म रिटर्न एप्लीकेशन बाय एंड on behalf of the company as an authorized representative रिटर्न फाइल करना रजिस्टरिंग करना कंपनी को रजिस्टरिंग करना डॉक्यूमेंट करना कंपनी के जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो करना इंक्लूड फॉर्म्स करना उनको रिटर्न रिटर्न करना रिटर्न्स भरना वगैरह रहते हैं वो एप्लीकेशंस कंपनी के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं उसको बनाना उसके तहत काम करना उसके ऊपर काम करना बाय एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एज एन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव Maintenance of secretarial records, statutory books and registers. Maintenance of maintenance of secretarial records, statutory books and register. Maintain करना secretarial records को, statutory books को and register करना. Arranging board, general meeting and preparing minutes thereof. अरेंज करना बोर्ड और जनरल मीटिंग्स को प्रिपेयर करना मिनट्स को मिनट्स मतलब वो होता है कि जो कंपनी का जो भी मीटिंग होती है वो मीटिंग समाप्त होने के बाद जो कंपनी सेक्रेटरी उसको रिकॉर्ड करता है उसको बनाता है उसको मिनट्स बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी जो भी रिकॉर्ड करता है ऑल वर्क रिलेटिंग टू शेयर एंड देयर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन सेक्रेटरियल ऑडिट कंपनी सेक्रेटरी का भी ऑडिट होता है सेक्रेटरी ऑडिट होता है कंपनी में सेक्रेटरियल ऑडिट होता है कंपनी में According to Section 204 of the Companies Act 2013, every listed company and every public company having a paid-up share capital of 50 crore rupees or more, every public company having a turnover of 250 crore rupees or more, or for every company having outstanding loan borrowing from bank or public financial institution 100 crore rupees more shall connect with its board. Report made in terms of Section 134, Clause 3, a secretary audit report given by company secretary in practice. In prescribed form, a format of secretary audit report prescribed in form number MR3. क्या बोला गया है कंपनी में किस कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट होगा किसके तहत सेक्शन 204 के तहत एवरी लिस्टेड कंपनी कौन सी कंपनी एवरी लिस्टेड कंपनी एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल पेड अप एवरी पब्लिक कंपनी और लिस्टेड कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए 50 करोड़ रुपीज और मोर उससे ज्यादा एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग टर्न ओवर 250 करोड़ रुपीज
पब्लिक कंपनी का जो भी टर्नओवर है वो 250 करोड़ रुपीस होना चाहिए और मोर होना चाहिए। एवरी कंपनी हैविंग outstanding loan or borrowing from bank or public financial institution of 100 crore rupees or more। जो भी कंपनी है उसने लोन लिया है बोरो किया है किससे, बैंक और पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, कितना 100 करोड़ और मोर, तो उसके लिए फिर सेक्रेटरी ऑडिट होगा। जो भी सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट है वो प्रेस्क्राइब फॉर्म दिया गया है, किसके तहत बनाएंगे उसको, MR3 के तहत। What shall be the duty of the company? It shall be the duty of company to give all assistance and facility to the company secretary in practicing for auditing the secretary and related record of the company। Every company, हर एक कंपनी की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कंपनी सेक्रेटरी को जो जो चीज़ें उसको लग रही है, जो जो उसके डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं उसे, वो कंपनी उसे प्रोवाइड करे। The board of directors in the report made in terms of Section 134, Clause 3 of the Companies Act 2013 shall explain in full any qualification or observation or the remark made by the company secretary in practice in his report। कंपनी सेक्रेटरी ऑब्जर्व करता है, देखता है, रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स कर उसके तहत सेक्रेटरी ऑडिट करता है। If a company or any officer of a company or company secretary in practice contravenes the provision of this section, the company, every officer of the company or a company secretary in practice who is a default shall be liable to a penalty of 2 lakh rupees। If a company or any officer of the company or company secretary in practice contravenes the provision of the section, the company, every officer of the company secretary practice who is a default shall be liable to penalty of rupees 2 लाख। अगर कंपनी या कंपनी का कोई कंपनी सेक्रेटरी और कंपनी का कोई भी ऑफिसर कोई भी डिफॉल्ट करता है, कोई भी रॉन्ग करता है, तो उसे 2 लाख रुपए का पेनल्टी लगेगा। Corporate Law Advisory and Representation। Corporate Laws Advisory and Representation। Advising company on company of a legal procedure expert particular under। कंपनी एडवाइस करती है, कंपनी सेक्रेटरी जो है, कंपनी सेक्रेटरी वो एडवाइस करता है इनको इनको एडवाइस करता है कंपनी के तहत। सेबी एक्ट, स्करा एंड रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। Insolvency and Bankruptcy Code, Foreign Exchange Management Act, Consumer Protection Act, Depositories Act, Environment and Pollution Control Law, Labor Industry Law, Cooperative Societies Act, Merger and Amalgamation and Strategic Alliances, Foreign Collaboration and Joint Venture, Setting up Subsidiaries Abroad, Competition Law, IPR Protection Management Valuation and Audit, Real Estate Act, Arbitration and Cancellation Act। Prescribed on behalf of company and other person before, represented on behalf of company and other person before। ये बोलता है रिप्रेजेंट करता है किसके तहत, कंपनी के तहत, हम पर्सन बिफोर, रजिस्टर ऑफ कंपनी, रीजनल डायरेक्टर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, Competition Commission of India, Securities Appellate Tribunal, National Company Law Appellate Tribunal, Consumer Forum, Telecom Dispute Settlement and Appliances Appellate Tribunal, Trademark Authority, Special Economic Zone Authority, Tax Authority, other quasi-judicial body and tribunal, Arbitration Cancellation Service, arbitration acting as a arbitrator, conciliator in domestic, international, commercial dispute, advising on arbitration, negotiation, and cancellation in commercial dispute between the parties,
and drafting arbitrary cancellation agreement clause। कंपनी के बीच कुछ भी डिस्प्यूट हुआ है, झगड़ा हुआ है, ए और बी कंपनी के बीच में, तो कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस करता है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, पूरी कोशिश करता है, उसे सॉल्व करता है, उसमें एक अग्रीमेंट बना देता है कि हाँ ये जो डिस्प्यूट है वो अब कैंसिल हो चुका है। फाइनेंशियल मार्केट सर्विस, कंपनी सेक्रेटरी जो है फाइनेंशियल मार्केट सर्विस देता है। पब्लिक इशू, लिस्टिंग एंड सिक्योरिटीज मैनेजमेंट, एडवाइजर, कंसल्टेंट इन इशू ऑफ शेयर एंड अदर सिक्योरिटी, एडवाइस देता है शेयर को इशू करना है, परचेस करना है, सेल करना है या ट्रांसफर वगैरह करना है। प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड फिजिबिलिटी स्टडीज, प्रिपेयर करता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट को। सिंडिकेशन ऑफ लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कंपनी के तहत लोन लेता है कंपनी सेक्रेटरी। सिंडिकेशन ऑफ लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, ड्राफ्टिंग ऑफ prospectus, offer for sale, letter of offer, other document related to issue of securities, and obtaining various approval in association with lead manager, loan document, registration of charges, status, and search report ये करता है। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, डिलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज विद रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, लिस्ट करना सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी सेक्रेटरी का काम है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर एंड अदर सिक्योरिटीज, प्राइवेट करना, बायबैक ऑफ शेयर एंड अदर सिक्योरिटी, कंपनी सेक्रेटरी बायबैक भी करता है। रेजिंग ऑफ फंड फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, एडीआर, जीडीआर, ईसीबी, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के तहत रेज करता है फंड को। Takeover code and insider trading, ensuring compliance of the takeover regulation and any other laws or regulation laws and rules as may be applicable in this regard. Ensuring compliance of the takeover regulations and any other law rules may be applicable in this regard. कंपनी सेक्रेटरी इंश्योर करता है कंप्लायंस को, रूल्स रेगुलेशन को, ये अप्लीकेबल होंगे, अप्लीकेबल कराता है रिगार्ड्स के तहत, applicable in this regard. एक्टिंग एज ए कंप्लायंस ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट करता है में कंप्लायंस ऑफिसर के तहत। एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विथ सेबी, कंप्लायंस करता है सेबी के तहत। रेगुलेटिंग रेगुलेशन इंक्लूडिंग मेंटेन ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट, मतलब मेन जो कई सारे डॉक्यूमेंट होता है उसको मेंटेन करके रखता है कंपनी सेक्रेटरी। सिक्योरिटीज कंप्लायंस एंड सर्टिफिकेशन सर्विस, Securities Compliance and Certification Service, Internal Audit Depository Participant Certification under SEBI, LODR, CDR regulation, audit in relation to reconciliation of shares, certificate in respect of compliance of private limited unlisted public company, certificate that है compliance private company है कि unlisted public company है इसके तहत। सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न का सर्टिफिकेट बनाते हैं। क्वार्टरली शेयर कैपिटल रिकंसिलेशन सर्टिफिकेट अंडर सेबी, सर्टिफिकेशन अंडर IFSCA regulations, ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेशन अंडर सेबी रेगुलेशन 2021। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्विस, कंपनी सेक्रेटरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्विस भी देता है। इंटरनल ऑडिट, सेक्रेटरी टू ऑडिट कमिटी, working capital liquidity management, determination of
appropriate capital structure, analysis of capital investment proposal, business valuation, period to merger and acquisition, loan syndication, budgetary control, accounting and compliance of financial statement. कंपनी सेक्रेटरी टैक्सेशन सर्विस भी देता है. एडवाइजरी सर्विस टू कंपनी ऑन टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स को कैसे मैनेज करना है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स की प्लानिंग कैसे करनी है अंडर द इनकम टैक्स एंड जीएसटी एंड कस्टम लॉ के तहत. प्रिपेयर रिव्यू वेरियस रिटर्न रिपोर्ट रिक्वायर्ड कंप्लायंस विद टैक्स लॉ एंड रेगुलेशन. कंपनी सेक्रेटरी टैक्स लॉ को भी मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है. टैक्स लॉ को मेंटेन करता है कंपनी में कि जो भी टैक्स है वो बरोबर भरना चाहिए या जो भी उसके टैक्स से जो है वो रिड्यूस कर सके, ये देखता है. रिप्रेजेंटिंग कंपनी एंड अदर पर्सन बिफोर टैक्स अथॉरिटी एंड ट्रिब्यूनल. कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, कंपनी को रिप्रेजेंट करता है पर्सन बिफोर टैक्स अथॉरिटीज एंड ट्रिब्यूनल के तहत, कंपनी के तहत. इंटरनेशनल ट्रेड एंड डब्ल्यूटीओ सर्विस. इंटरनेशनल ट्रेड एंड डब्ल्यूटीओ सर्विस. Advising on all matter related to IPRS and TRIP agreement of WTO. Advising on matter related to anti-dumping subsidiaries and countervailing duties, international commercial arbitration. Advising on and issuing certificate on foreign trade policy and procedure. एडवाइस करना, एडवाइस देता है on intellectual property license and drafting of agreement के तहत. 6. Acting as a registered trademark agent. मैनेजमेंट सर्विस जनरल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या क्या सर्विस है कंपनी सेक्रेटरी की. एडवाइजिंग अ लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस पॉलिसी स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग, बिजनेस की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे हम बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे. फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. एक्टिंग एज ए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव टू ऑब्टेन आईएसओ सर्टिफिकेशन. कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड पब्लिक रिलेशन. पब्लिक रिलेशन बना के रखना पड़ता है कंपनी सेक्रेटरी को कि कंपनी अच्छे से चले. कम्युनिकेशन विथ स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर के साथ, गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स एंड अथॉरिटीज के साथ भी पब्लिक रिलेशन होने चाहिए. एडवाइजरी सर्विस फॉर ब्रांड इक्विटी इमेज एंड बिल्ड. कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस देता है अपने सर्विस के बारे में, ब्रांड, कंपनी का जो भी ब्रांड इक्विटी और इमेज बिल्ड करना कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैन पावर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ऑडिट ऑफ द एचआर फंक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, मोटिवेशन एंड रिम्यूनरेशन स्ट्रेटेजी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑफिस मैनेजमेंट वर्क स्टडी परफॉर्म स्टैंडर्ड एडवाइजिंग ऑन इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज. आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्लायंस विथ साइबर लॉ को देखना. कंडक्टिंग बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग. अगर किसी को फिजिकली आना पॉसिबल नहीं हुआ कंपनी के अंदर तो कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी है कि वो अरेंज करे वीडियो कॉन्फ्रेंस और टेली कॉन्फ्रेंसिंग को. एडवाइजिंग ऑन सॉफ्टवेयर कॉपीराइट एंड लाइसेंसिंग, एडवाइस करना सॉफ्टवेयर कॉपीराइट और लाइसेंसिंग को. डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट एंड कंट्रोल्स, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिपोर्ट्स एंड कंट्रोल. रिपोर्ट को मैनेज करना, रिपोर्ट्स बनाना और मैनेजमेंट को कंट्रोल करना थोड़ा बहुत. डेवलप ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट्स एंड कंट्रोल्स. मेंटेन ऑफ स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मेंटेन स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करके रखना स्टैट्यूटरी जो भी रिकॉर्ड होंगे. सेंडिंग नोटिस टू शेयर होल्डर बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, शेयर होल्डर को अगर कोई भी नोटिस देना है
तो कंपनी सेक्रेटरी इलेक्ट्रॉनिक मोड में देना पड़ता है। फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स डॉक्यूमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, फाइल करना डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट है, जो भी रिटर्न्स है, जो भी फाइलिंग करनी है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कंपनी सेक्रेटरी को फाइल करना पड़ता है विथ आरओसी के पास, अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज, अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज।